Let us begin the journey of learning stenography. In this video, I am going to explain the meaning of English stenography and its requirements. First of all, let us start with the meaning of stenography. As it is already written here, the meaning of stenography is writing by sound, that is, it is a sign language. The above sentence is written in the sign language below, and as you see that it is a symbolic representation of the above statement of the above words. So this is very easy. So it is the writing, say what we say is what we write it. Okay, so it is a sign language basically, and we write it by using some light and dark strokes. The main focus of the stenography is on on focusing on the light and dark strokes. अगर हम बात करें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टेनोग्राफी के लिए, तो हमें एक स्टेनो पैड की ज़रूरत पड़ती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, विच इज़ ईज़िली अवेलेबल ऑन स्टेशनरीज़. एंड अगर हम बात करें एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, तो पेंसिल अगर इफ बोलें तो प्रेफरेंस जो होता है वो अक्सर स्टेनो बॉन्डेड लीड को दिया जाता है, क्योंकि it is very difficult for us to differentiate between the light strokes and dark strokes by using this pencil and a sharpener. We avoid the use of eraser, क्योंकि बार बार इरेज करने से हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हम उसके यूज़ को अवॉइड करते हैं. एंड अगर बुक्स रेफ़र करने की बात करें तो बुक्स इज़ द बेस्ट बुक इज़ वी ऑल नो द पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक, as Pittman is the father of shorthand, and this book is best for learning shorthand. नाउ स्टेनोग्राफी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी वैकेंसीज आती हैं. जैसे कि हम बात करें तो डिफेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कोर्ट एंड सो ऑन, एंड मेनी ऑथोरिटीज़ कंडक्टेड द एग्ज़ाम्स लाइक SSC, DDA, DRDO एंड सो ऑन. सो बेसिकली इससे हम सेक्रेटेरियल असिस्टेंट बन सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ. सो स्टेनोग्राफी की जो स्पीड होती है उसमें वेराइटीज़ होती हैं, लाइक इट इज़ ऑफ 60, 80, 100, 120 एंड 140 वर्ड्स पर मिनट. जो मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट होती है वो 80 एंड 100 वर्ड्स पर मिनट होती है. स्टेनोग्राफी के साथ हमारी जो इंग्लिश टाइपिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, द फर्स्ट चैप्टर विच वी कॉल्ड कॉन्सोनेंट. जैसे कि हमें पता है इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट एंड वोवल होते हैं, ऐसे ही स्टेनोग्राफी में एक्चुअली ये भी एक लैंग्वेज होती है. तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स पढ़ने पड़ते हैं, बट स्टेनोग्राफी के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं. जैसे कि मैंने बताया, जो हम बोलते हैं वो हम लिखते हैं. तो यहाँ पे भी कई सारे पेयर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के. जो फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स ओवरऑल. अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट 8 पेयर होता है कॉन्सोनेंट का, वी रिप्रेजेंट इट बाय अ सर्कल ऑल्सो, बट वो सर्कल का आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज P, विच इज़ अ लाइट स्ट्रोक. नाउ यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो ये होती है कि ये जो लाइन दिख रही है इसका जो 1/3 पोर्शन होता है वो स्ट्रोक्स कवर करते हैं, लाइक लाइट स्ट्रोक इट इज़ P. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए स्टेनोग्राफी में इज़ द color, that is the light and dark stroke, on the basis of which we can differentiate between these strokes. If we talk about B, so it is dark and also ensure about the length. Okay, it's 1/3 between these two lines. If we talk about T, it's straight and light. If we talk about D, it's dark. If we talk about J, see there is J, it's light. If we talk about J, there is J. If we talk about K, so it is light on the line.
If we talk about gay, it is right like this and it's dark. तो सर्कल जो है, हम ये 8 कॉन्सोनेंट्स को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? हमने यहाँ बनाया P and then we made B, then T, then D, then J, then we write K. It's K and then K. So it's just a better means of learning the basic consonants. These 8 consonants are known as explodents. What we called it? Explodents. Now, next 8 pair of consonants are called continuants. What we called it? Continuants. So it includes F. This sound, pronounce it here F, right? So it's little bit curve and a light stroke. Just think about the light and dark stroke and also the size, okay? If we talk about V, so it's V. And also you have to focus on the sound like P. P is a light sound. So वो एक light stroke होता है. B. B बोलने में pressure लगता है. तो वो क्या होता है? एक डार्क स्ट्रोक होता है. जस्ट थिंक अबाउट इट ऑल्सो. लाइक एफ़, तो एफ़ बहुत लाइट साउंड देता है तो हम इसको लाइट स्ट्रोक से डिनोट करते हैं. एंड वी क्या होता है? एक डार्क, एक प्रेशर लगता है उसे बोलने में, थोड़ा लंबा साउंड देता है तो उसको हम डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट इट, वी राइट हियर TH ऑल्सो. So it is like this. If we talk about D, so it is a dark D. Fine. Now if we talk about S, so this sound S, okay, like we can say S also. It's light. Then we talk about Z. Z is what? Z. It's Z. Okay. If we talk about SH, it's sharp. It's a light stroke. And if we talk about Z, that is ZH, it's a dark stroke. Fine. So these 8 are called continuant. So what we learn: P, B, T, D, J, J, K, G, F, V, it, D, S, Z, SH, ZH. Fine. Now the next consonants are nasals. What we call nasals. Why we call it nasals? Like M, N, ing, because we use M there, right? Like a light stroke like this. N like this, and ing. Ing is same as N but it's a dark. So these 3 are called nasals. If we talk about liquids, what next? Liquids. So liquids include L and R. L को हम L बोल सकते हैं. What we say, we write it. So L जो होता है, it's a light, और हम इसको अववर्ड बनाते हैं. अगर हम R की बात करें तो R 2 पार्ट्स में बनता है. एक होता है अर और एक होता है रे. Actually it depends on the sound. Fine. So R is this and re is this one. These all are light. So these are liquids, L and R. Now next is coalescence. Fine. Coalescence. Now these are वे and ये, or we can say W or Y, but the sound is of वे and of ये. तो वे को हम अब बनाते हैं और ये को हम ऐसे बनाते हैं, बट ये इसमें हुक लगा होता है. फाइन. So it's just a वे and ये.
एंड इफ लास्ट वन इज एस्पिरेट, एस्पिरेट में एक ही आता है जिसे हम एच बोलते हैं, जिसका साउंड हे देता है, बट हे जो होता है वो अपवर्ड भी बन सकता है और डाउनवर्ड भी बन सकता है. सो दीज ऑल आर लाइट. फाइन. So what we learn there are the consonants, that is explodents, continuants, nasals, liquids, colsescents and aspirate. It requires a lot of practice because the consonants are the basis of stenography. So इसकी light and dark एंड इसको कैसे करना है, कैसे बनाना है, इसमें इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. तो जब तक वी डोंट नो दी हाउ टू राइट दी कॉन्सोनेंट, सो वी आर नॉट एबल टू लर्न दी स्टेनोग्राफी. तो कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस, एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट विल प्रैक्टिस फॉर 10 टाइम्स और 20 टाइम्स जब तक आपके स्ट्रोक्स ठीक से नहीं बनते. सो जस्ट प्रैक्टिस इट. If you like it, so please like and subscribe. Thank you.